Okay guys, in the previous video we solved question 1 till 6. Now let's come to question number 7. Actually previous video was accidentally stopped. So question 7 from the same specimen paper for May June 2023. It is, let's move to question number 7. A skydiver is falling at terminal velocity. So terminal velocity is that velocity which is constant and it is obtained when weight becomes equal to air resistance or resistive forces. So when weight and air resistance are equal, so terminal velocity will be gained. So terminal velocity may acceleration, since velocity is constant, so acceleration is 0. That's the option. Acceleration is 0, velocity is constant. Next question. Which car experiences a resultant force that is not 0? A car moving along a straight horizontal road at constant speed. So कांस्टेंट स्पीड में रिजल्टेंट फोर्स जो है ज़ीरो होगी क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल होती हैं. हमारा क्वेश्चन है नॉट ज़ीरो, तो वो ये है, कार मूविंग अराउंड अ बेंड. जब कार एक बेंड के अराउंड मूव करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करती है विच इज़ नॉट ज़ीरो, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है. राइट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. Number 9. A car is designed to be stable. Where must the center of gravity of the car be? So we know from the text that center of something, if something has to be made stable, its center of gravity should be kept as low as possible. So that's the right option, option D. Next question. Yeah. So in this question, they have asked, the diagram shows a block being pulled up a ramp by a rope. The block has weight W and rope is pulled with a force F. The block moves a distance PR and is raised through height QR. So ये height QR है और ये block ने in the direction of force उसने distance PR cover किया है. We have to find out or we have to determine which equation will represent work done. Work done बेटा होता है force multiplied by displacement, and displacement should be in the direction of force. Right? So that's why option A. हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये पूछें कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, उसमें हम इसके वेट को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से. हाइट इज क्यू आर. तो फिर उस केस में ऑप्शन जो है क्यू आर वो यहाँ गिवन नहीं है, वो होता. 11. विच यूजेज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इनमें से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है. बाकी सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर रिन्यूएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which expression gives the efficiency of an AC generator? Okay बेटा, efficiency का फॉर्मूला होता है यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट. अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे. सो बेटा, यूजफुल आउटपुट एसी जनरेटर के केस में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलती है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट और उसको टोटल जो एनर्जी इनपुट प्रोवाइड की जाती है. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट. मर्करी इज अ लिक्विड. द डायग्राम शोज अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर. विच हाइट इज मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वी नो दैट इन अ बैरोमीटर the height of mercury column is basically a measure of atmospheric pressure. तो इस केस में हाइट ऑफ मर्करी कॉलम जो है वो ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गैस इज इन अ सील्ड कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. द गैस इज हीटेड एंड द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इंक्रीजेज. तो गैस हीट हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. सो प्रेशर ऑफ गैस, उसका जो मेन कॉज है वो है कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर. राइट, collision of gas molecules
to the wall of container. So they hit container more frequently will be the correct option. Next question. A person cannot open a glass jar which has a metal lid. So he hit after the lid is held under hot water for a few seconds, the jar opens easily. What is the explanation for this? So definitely lid is a metal, so it will be expanded when it will heat up. So the correct option will be the metal lid expands, means option D will be the correct one. Next question. The more energetic particles escape from the surface of a liquid. Which term describes this process? So that is evaporation. Basic definition of evaporation. Because of it, this evaporation is a cooling process. Because more energetic particles escape the surface of liquid. Next question. Yeah. An important one. So, the depth of the sea under a ship is determined by sending a pulse of sound with a frequency 3000 Hz from a transmitter on the bottom of the ship to seabed. The sound reflects from the seabed and returns. So this is the basically case of echo. So बेटा डेप्थ जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया साउंड ने एक डायरेक्शन में वो 600 है और टाइम टोटल मेजर किया 0.80. यू हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ. तो पहले हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे. स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम. सो बेसिकली वेव ने टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर कवर किया. डेप्थ तक साउंड वेव ट्रैवल की, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई. तो डिस्टेंस 600 प्लस 600 बिकम्स 1200 एंड टाइम इज 0.80 सेकेंड. इनको डिवाइड करके स्पीड आएगी. फिर बेटा यू विल यूज़ लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ वेव इक्वेशन और पुट करके हम वेव लेंथ फाइंड कर लेंगे विच विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे एक साउंड वेव लाइट वेव इंसिडेंट हुई है प्लेन मिरर पे और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और ये एंगल गिवन है 80 डिग्री. अब अगर हम मिरर की लाइन को जो बाउंड्री लाइन है इसको एक्सटेंड करें तो ये 80 एंगल हाफ हो रहा है, मीन्स ये एंगल बन गया 40. एंड वी नो दैट कि नॉर्मल लाइन जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है और सरफेस के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है. तो ये एंगल 40 तो ये एंगल बन गया 50, राइट. इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑल्सो बी द सेम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन. सो option D will be the correct one. Question 19 now. An object O is placed in front of a lens. Ray diagram is showing the path. So अब ये रे डाइवर्ज हो रही है. So definitely हम फाइंड आउट करना चाहेंगे. अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा और इमेज किस टाइप का बनेगा. प्रिंसिपल फोकस फाइंड करने के लिए हम इस लाइट रे को एक्सटेंड कर लेते हैं. इस लाइट रे को अगर आप एक्सटेंड करें अगर आप इसको स्केल को बिल्कुल यहाँ पे लाइन के बिल्कुल साथ रख के एक्सटेंड करें तो यू विल सी कि लाइट रे पी पे आके मीट कर रही है, राइट. सो प्रिंसिपल फोकस विल बी एट पॉइंट पी और इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रही है जहाँ पे रेज मीट कर रही हैं. सो दिस इमेज इज़ डेफिनेटली वर्चुअल क्योंकि रेज इमेज इस इमेज आप इस इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये रे को हमने बैकवर्ड वर्चुअली एक्सटेंड किया है तो इमेज बनाया. सो दैट विल बी अ वर्चुअल इमेज एंड फोकस विल बी एट पॉइंट पी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 20. We have to find out what is the distance. It's a longitudinal wave. We can see a series of compression and rarefaction. ये compression है part, ये rarefaction है. compression, rarefaction, compression, rarefaction. So wavelength होती है from the center of a compression to a center of compression or a center of rarefaction to the center of next rarefaction. So यहाँ पे option B जो है that is correct one. बाकी ऑप्शंस आप देख लें. जैसे ऑप्शन सी है ये रेयरफेक्शन से स्टार्ट होके कंप्रेशन पे एंड हो रही है तो दिस इज़ नॉट वेवलेंथ. वेवलेंथ होती है सेंटर ऑफ कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ कंप्रेशन और सेंटर ऑफ रेयरफेक्शन टू द सेंटर ऑफ रेयरफेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट.
तो हमने डीसी सप्लाई दी इस सोलेनॉइड को and inside there is a metal core, so it becomes a temporary magnet. How can the strength of magnetic field around electromagnet can be increased? तो हमने पढ़ा है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए हम 3 मेजर्स होती हैं: इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग करंट सप्लाई, एंड थर्ड इज इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर। इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए, रिमूव द मेटल कोर एंड डिक्रीज द करंट, नो। बी ऑप्शन, रिमूव द मेटल कोर एंड कीप द करंट इन द, नो। रिवर्स द डीसी सप्लाई एंड डिक्रीज द करंट, रिवर्स द डीसी सप्लाई एंड इंक्रीज द करंट, या रिवर्स द डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी सप्लाई ये आ रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देयर इज अ रेजिस्टर इन बिटवीन, सो रिवर्स द डीसी सप्लाई and increase the current. Option D will be the correct one. Next question, which material can a temporary magnet be made from? So इसमें बेटा soft iron correct option होता है। Temporary magnet के लिए जो best material है which responds most is soft iron. So that's the correct option. Okay? So we will solve remaining question in the next video. Thanks for watching.